एंड मेरे सीनियर्स ने जेई मेंस फेल करा है, सो मैंने भी फेल करा था ऑब्वियसली। इसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है, लेकिन क्लाइंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि देयर इज अ हेल लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। सो आई मेड अप माई माइंड कि मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा। आई वुड नेवर गो फॉर एनी इंटर्नशिप और जॉब। Hearing only that you won't work for others. एग्जैक्टली। एंड कि आप बोले कि सिर्फ 25,000 कमाते थे, तो घर से क्या रिस्पॉन्स आता था? आप डिमोटिवेट नहीं हो जाते? आप 3.5 लाख, दिस इज रियली अ वेरी बिग अचीवमेंट। Hi everyone, this is Ronit. In today's video, we have a very special guest, or rather I would say a very cool person with us. He is an engineer, a designer, a motivator, and much more to me. His name is Sir Md Aamir Akhtar. He is currently pursuing BTech in Chemical Engineering from BIT Sindri. From studying chemical engineering to earning in lakhs at the age of 22. In this video, we'll go through his journey and try to gain some knowledge in his field of work. Sir. So first of all, thanks for having me on your show. It's been a pleasure to come here and talk about graphic design. So first of all, as you said कि पूरा का पूरा वीडियो ग्राफिक डिजाइन के बारे में होने वाला है, तो I would be like talking about graphic design as a center of the conversation. So shoot your questions. Can you throw some light on the topic of graphic designing so as to let the viewers get acquainted with it? देख भाई, अगर ग्राफिक डिजाइन के बारे में पूछ रहा है तो एज अ डेफिनेशन आई हैव अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस ऑन इट, और यू कैन आल्सो गूगल इट, बट आई वुड बी आंसरिंग अ क्वाइट प्रैक्टिकल वन. लेट्स ब्रेक इट डाउन. ग्राफिक डिजाइन इज ऑल अबाउट व्हेन यू प्लान समथिंग एंड क्रिएट. जो भी आर्टिस्ट होते हैं मोस्टली दे जस्ट गो ऑन क्रिएटिंग इट विदाउट एनी प्लान. So whenever you plan something and create, it's called graphic design. And whenever you want to communicate something, whenever you want to communicate a message with a visual storytelling, it's called graphic design. Sir, can you tell me about what are the basic softwares needed for graphic designing? Basic softwares तो Adobe Creative Cloud के होते हैं. Mostly Adobe Photoshop और Illustrator use होता है. और but nowadays Figma is becoming more of industry standard. But if you are a beginner, I would suggest कि you would start with Adobe Photoshop or Illustrator and then eventually jump into Figma. That makes your work quite easy. और Adobe Photoshop और Illustrator काफ़ी सारे tutorials available हैं online. I would suggest GFX Mentor as a YouTube channel. उसकी एक पूरी playlist है बनी हुई. Then you can like are good to go with that. So next question is, how and when you started graphic designing? What made you interested in this field, sir? I would like to answer this question in this way, like nobody knows what to do. Whenever you are in college, in first year of college, तुम्हारे सामने ऐसे ढेर सारे options होते हैं. You are like तुम्हारे बैचमेट्स कोडिंग कर रहे हैं, कोई जावा सीख रहा है, कोई C++ सीख रहा है, कोई फोटोग्राफी, like मैं ही फोटोग्राफी कर रहा था and not it's not so common. So you have a lot of options in front of you, right? कोर ब्रांचेस होते हैं, गेट का प्रिपरेशन, बीआईटी में गेट बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. अगर तुम गेट नहीं करोगे तो यू आर लाइक disowned from BIT. ठीक है, तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग. मैंने हर चीज़ करा, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, whatever came in across me, came in front of me, I tried it. You have tried in this first year? Exactly. Yeah. So मेरा टेक्निक ये था, like what differentiated me from other people who were just juggling between different skills, कि मैंने चीज़ों को एलिमिनेट करना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल मैंने जावा सीखा एंड आई गॉट टू नो कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. अगेन मैंने C++ सीखा, मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा, और ऐसे करते करते चीज़ें एलिमिनेट होती गई एंड इवेंचुअली आई लैंडेड अप किया ठीक है ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई गॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म बाई बीइंग अ पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप. करण राज सर के स्टार्टअप था 2K16 बैच के. इट वॉज कॉल्ड एज द हेलो डॉक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज नाउ कॉल्ड एज मेरे डॉक्टर. अभी रीब्रांडिंग हो गई है. So that gave me a quite good platform to showcase my skills, to practice my skills, and obviously सामने से requirements आ रही हैं. For example, अगर तू खुद से कुछ कर रहा है, एक होता है पर्सनल प्रोजेक्ट, एक होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट में तो क्या होता है कि तुम्हारे खुद का वो थेसिस होता है, तुम खुद से कुछ एज्यूम करके उसको बस सॉल्व कर रहे होते हो, उसको बना रहे होते हो. ग्राफिक डिजाइन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो तुम एक मेन जस्ट फॉर एग्जांपल वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट तुम खुद से बना रहे होते हो. लेकिन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम, इफ यू आर पार्ट ऑफ स्टार्टअप,
तो दे आर सॉल्विंग अ पर्पस, तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट्स आएंगे एंड देन यू गेट अ रोड मैप टू बिगिन विद। तुमको पता होगा क्या बनाना है, ऑल्दो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं था, लाइक आई डिडंट हैड एनी ऑफ द स्किल्स, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या डिजाइन करते हैं, इलस्ट्रेटर क्या होता है, एडोबी एचडी क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो इवेंचुअली नीड पड़ी, आई गॉट दैट नीड, तो मुझे फिर सीखने का मौका मिला, राइट। एंड यहाँ से एक बहुत बड़ा लेसन ये आता है कि ऑलवेज बी ओपन टू एवरीथिंग एंड कभी अपने को बंद मत रखो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है जस्ट बाउंस ऑन इट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे ना, बट यू वुड गेट टू लर्न अ लॉट। So you took a part apart from the herd, which could be a very valuable lesson for others. Absolutely, and I also had this mentality in my first year ki whatever my batchmates were doing, whatever they have been going through, वो नहीं करना है, because they were the people जिन्होंने JEE मेंस फेल करा है and मेरे सीनियर्स ने JEE मेंस फेल करा है, so मैंने भी फेल करा था ऑब्वियसली, आई वाज ऑल्सो, कोई मैं लेजेंड नहीं था। सो एक माइंडसेट ये था कि यार जो ये लोग कर रहे हैं इनसे कुछ अलग करना है, एटलीस्ट वो तो करना है। लाइक लोग पबजी खेल रहे हैं एंड लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, अगेन डूइंग द सेम मिस्टेक। इफ दे आर फेल्ड इन अ जेईई एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, तो मुझे एटलीस्ट ये रियलाइज हो गया कि इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर मी। द डे आई केम टू बीआईटी सिंधरी आई रियलाइज कि भाई इंजीनियरिंग नहीं करनी है मेरे को। थोड़ा आयरॉनिक सा साउंड करता है लेकिन बस ये था, काफी लॉजिकल सा माइंडसेट था मेरा। अभी आपका बैचमेट्स आपको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। या नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क दैट व्हाट आर द जॉब्स एंड स्कोप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, कैन यू लाइक गुड क्वेश्चन। ग्राफिक डिजाइन के जो जॉब्स और जो भी स्कोप है ना, ये बहुत ज्यादा लिमिटेड परसेप्शन है इंडियन ऑडियंस में, क्योंकि इंडिया में उतना स्कोप है भी नहीं। लाइक आई रेड समवेयर कि इंडिया में अगर तुम एवरेज सैलरी देखोगे ग्राफिक डिजाइनर का, तो इट्स अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ। 30,000 एग्जैक्टली। एंड व्हेन यू मूव टू यूरोप, यू मूव टू द यूएस, इट्स अराउंड लाइक 3 to 4 lakh rupees a month. 3 to 4 lakhs, this is a very big difference. Exactly, it's like 10x or 12x the average, और ये बस एवरेज है, you can earn even more than that. I have a colleague in my startup जहाँ पे मैं काम करता हूँ, his salary is like 12 lakh rupees a month. Yeah, but he has experience of like 17 to 18 years. He started like in 2000s जब .com burst हुआ था and all of that. So हाँ, स्कोप की बात करते हैं तो इंडिया में अगर it's like the same आंसर मैं दूंगा यहाँ पे कि if you have several doors in front of you, अगर तुम सब में नॉक करते जाओगे तो गलत डोर में नॉक करोगे, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में सबको ग्राफिक डिजाइन करना है क्योंकि ये बहुत इजी स्किल है, इट्स लाइक हैक इजी, बहुत ज्यादा आसान है करना, ग्राफिक डिजाइन सीखना बहुत आसान है, इसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है, लेकिन क्लाइंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि देयर इज अ हेल लॉट ऑफ कंपटीशन। ऑब्वियसली इट्स क्वाइट सिंपल कि बहुत ज्यादा अगर सप्लाई है तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो यू नीड टू गेट टू पीपल, गेट टू द प्लेस जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो और सप्लाई कम हो, वहाँ पे तुमको ऑब्वियसली ज्यादा पेमेंट मिलेगी और कम काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई लुक फॉर फॉरेन क्लाइंट्स एंड ऑब्वियसली आई एम गेटिंग पेड way above what an Indian designer gets paid. तो आपने जैसे बोला कि you are working in a startup, so in which startup you are working and how much you are paid for it? Like I am working in a German startup. It's based out of Germany, and we are like we have a global team, and it's based on a Web3 product, and we are like cross-chain aggregation. So I hope कि people who are into Web3 maybe knowing about this, like we are a cross-chain aggregation platform जो basically अगर आसान शब्दों में बताऊँ तो if you have INR and you want USD, तो you go to foreign exchanges, right? And so in the similar way, if you have Bitcoin के बारे में I guess everyone might have heard about it, right? So Bitcoin हमारे पास, तुमको Ethereum चाहिए, so you would come to us. That's the basic part of our product, and I am getting paid $4,000 a month. That amounts to like 3.2 lakh rupees a month. This is a huge amount you are earning in the age of 22. Thank you. It shows that if you follow your passion, you can achieve it. So I want to ask you the next question. How did you get your first freelance project? Can you share your experience, sir? Like first freelance project, I got my first freelance project after juggling around for around 4 to 5 months. Right, and it was through a referral, but I would not like to talk about that क्योंकि काफी आसानी से मिला था.
I would rather talk about my second freelance project. क्योंकि पहला मिलने के बाद it was quite monotonous for a couple of months. उसके बाद I kept working for the same client and वो काफ़ी boring सा हो गया था. Then I thought कि यार ठीक है, एक client तो मिल गया and I was a freelancer. First of all, I tried, I made this concept in my mind कि मैं किसी और के लिए काम नहीं You करूँगा. were in which year of college? This was second year. Exactly. So I made up my mind कि मैं किसी के लिए काम नहीं करूँगा. I would never go for any internship or job. राइट सो मैंने पहले से क्लियर कर रखा था इस क्लाइंट को कि आई वुड बी डूइंग फ्रीलांसिंग, मैं और क्लाइंट्स भी रख सकता हूँ, बट क्लाइंट्स वे नॉट कमिंग. सो आई एनरोल्ड इन अ लिंक्डइन वर्कशॉप बाय वैभव सिंधी. Like I would recommend audience to go and watch it if you want a job, if you are a student, if you are a freelancer, whatever. If you want growth in your career in general, you must be on LinkedIn और LinkedIn तुम्हारा अच्छा होना चाहिए. And if you want your LinkedIn to be optimized well, then you must opt for that workshop. Veham Siddhanti. Exactly. I would send you the link and you may put in description. Okay, I will put this LinkedIn profile in the description. Okay. Alright. So I enrolled in the workshop और मैंने अपना LinkedIn optimize किया and I started outreaching the clients. ठीक है. So the secret for getting clients is that कि तुम्हारे सामने वाले बंदे के पास उतना टाइम नहीं है. Right. Nobody has the time to go through a proposal पूरा का पूरा. You need to be quite straightforward. Hello sir, this is Amir. I am a freelance graphic designer. I saw that you are looking for this. अगर वो नहीं, he is not looking for it, then I saw that कुछ भी एक ऐसा line जो उसे engage कर सके. Something about him, do some research about him, go to his LinkedIn, go to his website, know about what his company is doing, offer some value, right? So be straightforward and have a purpose, have a meaning behind your message. जो भी तुम text करने वाले हो. उसके बाद अपना एक portfolio डाल दो, अपना एक portfolio का link. एंड क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मेरे पास उतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं था, बट स्टिल यू कैन मार्केट योर सेल्फ कि तुम एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो बाई शो केसिंग योर पर्सनल प्रोजेक्ट. और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हैक यूज किया था, दिमाग लगाया था कि मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स को एज कमर्शियल प्रोजेक्ट दिखाया था. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आई क्रिएटेड UI फॉर प्रीस्ट बुकिंग वेबसाइट जो मैंने खुद से क्रिएट करा था. मेरे वो अपना हाइपोथेसिस था, तो मैंने बताया कि यार ये मैं तो मेरा बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, वो उसका क्लाइंट है, मैंने उसके लिए बनाया था. सो आई यूज्ड टू मार्केट लाइक दैट. सो यू कैन लाइक प्रोबेबली टेल की फेक इट टिल यू मेक इट. सो दिस वाज माय टैक्टिक फॉर माय स्ट्रैटेजी फॉर गेटिंग न्यू क्लाइंट्स. और मैंने ये सारा मैसेज चिपका दिया. लाइक आई कोल्ड ईमेल्ड, आई डीएम्ड ऑन लिंक्डइन, आई डीएम ऑन इंस्टाग्राम. मैंने लाइक 100+ लोगों को डीएम किया, पोटेंशियल क्लाइंट्स को डीएम किया. Like I looked for startup founders, I looked for small business owners. Like again, knowing where your services might fit in, तो तुमको वहाँ पे जाके approach करना होगा and just do cold emailing, just cold outreach people. And I got my first client while outreaching in LinkedIn. और LinkedIn पे there was a ma'am, she was the founder of an agency, Kolkata based agency, and I got a project to build a landing page for them. Yeah. You've really worked hard for getting your first and second projects. एक सैचुरेशन फेज होता है यार, मतलब तुम इट गेट्स इजियर एज यू मूव फॉरवर्ड, राइट. सो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें क्लाइंट्स बनते जाएंगे, नेटवर्क बनते जाएगा, लेकिन सबसे हार्ड स्टेप होता है टू गेट स्टार्टेड. जो किक स्टार्ट होता है ना, सबसे हार्ड स्टेप होता है. वहां पे वंस यू क्रैक इट, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट जस्ट गोज विद द फ्लो. सर एग्जैक्टली आप करते क्या, मतलब फ्रीलांस? एक अगर मैं फ्रीलांसिंग को एज अ डेफिनेशन बताऊं तो यू आर विद अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर क्लाइंट, देयर इज अ बिजनेस एंड यू आर अ लोन फ्रीलांसर. दे नीड अ सर्विस, यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड you get paid for it basically, right? So in my case I am a graphic designer, तो मेरे graphic design as a service मैं ऑफर करता हूँ अपने क्लाइंट्स को एंड उनका कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइन को एज अ डेफिनेशन बताया था कि यू विजुअली कम्युनिकेट समवन एल्स मैसेजेस, राइट. सो मेरी कंपनी को कुछ मैसेज बताना है अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को बेसिकली, राइट. सो नोबडी इज गोना रीड योर लॉन्ग टेक्स्ट, राइट. सो आई जस्ट समराइज दैट टेक्स्ट, दैट मैसेज इन अ सिंगल विजुअल, एंड दैट्स व्हाट माय स्किल इन्वॉल्व्स डूइंग. और मैं वो करके फिर उन्हें सेंड करता हूँ एंड आई गेट द अप्रूवल. अगर चेंजेस करता हूँ मैं उसमें एंड आई गेट पेड फॉर दैट. इसमें दो सॉरी टू कट यू ऑफ, इसमें दो तरीके के पेमेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट पेड इन अर्ली रेट्स, like you just fix an hourly rate for that, maybe $10, $20, and the second way you just offer a single number for the contract. You would like charge $500 for the whole project, for like maybe 10 posters, for 20 posters, एक fixed amount होता है.
लाइक क्वाइट सिमिलर टू प्रीपेड टैक्सी और आर्ली टैक्सी जो होती है, लाइक जो मीटर वाली टैक्सी होती है। आपका बात सुन के सर काफी अच्छा लग रहा। अभी तो सबके अंदर जोश भी आ गया होगा कि अभी ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, फ्रीलांसिंग करना है। सर आप कितना चार्ज करते पर आर? अगर मैं आर्ली काम करता हूँ तो फॉर मी दैट नंबर हैज ग्रोन टू, आई वुड से ग्रोन टू, क्योंकि पहले बहुत कम था। पहले $5 $10 हुआ करता था, एंड नाउ इट्स लाइक 100 to 200 के बीच में होता है। आई हैव इवन चार्ज $200 पर आवर। दिस इज रियली अ बिग अमाउंट। आई वांट टू आस्क कि आपको कब रियलाइज हुआ कि आप इसी में अभी करियर बनाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग में? एज फार एज करियर इज कंसर्न, आई नेवर हैड अ प्लान बी। ठीक है, मतलब एज आई सेड कि फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग आई डिसाइडेड कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। सो आई न्यू कि आई हैव टू फाइंड अ वे आउट फॉर माई सेल्फ। आई हैव टू लाइक डू समथिंग ऑफ माई ओन। नोबडी इज गोना हेल्प मी, नोबडी इज गोना टेक माई हैंड एंड चलो आमिर तुम इतने पैसे मिल रहे तुम्हें, राइट? सो करियर ऑप्शन तो मेरा पहले से ये था कि मुझे कुछ करना है। ओके, यू हैव डिसाइडेड इन द फर्स्ट डे ऑफ द इंजीनियरिंग ओनली दैट यू वोंट वर्क फॉर अदर्स। एग्जैक्टली, एंड ऑल्सो वोंट वर्क फॉर अदर्स, और मुझे इंजीनियरिंग में जॉब नहीं चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद मेरे पास डिफरेंट थिंग्स है। ग्राफिक डिजाइन, एज आई सेड कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, एंड दिस कैन ऑल्सो बी आंसर्ड इन दिस वे कि मैंने किस दिन रियलाइज करा कि मुझे ग्राफिक डिजाइन एज अ करियर परस्यू करना है, राइट? सो आई वर्कड इन दैट स्टार्टअप फॉर अराउंड 1.5 years एंड दैट टू फॉर फ्री। ठीक है, एंड आफ्टर आई गॉट माई फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टार्टअप, बट आई वॉजेंट अर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बस जो फ्रीलांस से आ रहा था वो ही आ रहा था। बट इवेंचुअली कि जैसे फ्रीलांस का करियर मेरा आगे बढ़ा, आई गॉट टू अराउंड 25,000 रुपीज अ मंथ। आई अर्न 25,000 रुपीज अ मंथ, एंड मैंने एक अपने कॉपी में लिखा भी, लाइक आई अर्न दिस मंथ 25,000 रुपीज। तो वहाँ से लगा कि हाँ ठीक है, आई एम फिट फॉर दिस। लाइक मुझे हमेशा से पता था कि ग्राफिक डिजाइन में बहुत सारा स्कोप है, बट इट्स नॉट ऑलवेज फॉर यू। लाइक पैसे हर जगह मिल जाएंगे, यू वेरेवर यू वुड पुट एफर्ट्स यू वुड ऐड वैल्यू, तुमको वैल्यू वापस मिलने वाली है। ऐसा तुम गेट करोगे, तुम कैट करोगे, तुम इंजीनियरिंग करोगे, तुम आईएएस करोगे, जहाँ भी तुम इनपुट डालोगे तुमको आउटपुट मिलने वाला है। बट इट्स ऑल अबाउट नोइंग कि वेयर यू कैन, वेयर यू आर सपोज टू गेट योर इनपुट्स इनटू। सर जैसे कि आप बोले कि सिर्फ 25,000 कमाते थे, तो घर से क्या रिस्पॉन्स आता था? आप डिमोटिवेट नहीं हो जाते थे उस टाइम? You're talking about 25,000. I have been like starting में I earned like 100 rupees a poster. 100 rupees. Yeah, and that was my first freelance project. और तब मैंने पापा को बताया था कि I got freelance project. पापा आज की कितना मिल रहा है? तो I'm telling 100 रुपया। तो इससे ज़्यादा मैं कमा लेता हूँ दुकान में बैठ जा करके। ठीक है, तो that was kind of response I got in my first project. But eventually जैसे जैसे वो growth होती गई, वैसे वैसे थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी मिलते रहा। लाइक फैमिली से व्हेन एवर आई हैड टू अटेंड मीटिंग्स, ऑब्वियसली वर्किंग फ्रॉम होम तो पीछे में पूरा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और साथ साथ कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। तो आई यूज टू लाइक शट एवरीवन कि यार सब लोग उधर चले जाओ, इस एक रूम मेरे को खाली छोड़ दो, कोई हल्ला नहीं करेगा। ठीक है, तो इवेंचुअली सपोर्ट मिलने लगा फैमिली से इवेंचुअली। ठीक है, एंड आई गॉट validation from my family when I got my first freelance job from the foreign client, and that was about like 1.2 lakh rupees a month. This January only I got a validation from my family कि यार finally पापा मम्मी ने acknowledge करा कि हाँ ये जो कर रहा है सही कर रहा है। They must be very happy. Exactly, यार वो लोग जानते हैं। And how much you are earning right now? Last month I earned around like 3.5 lakh rupees. What? 3.5 लाख पर मंथ? मेरे तो गूजबम्स आ गए सुन के, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां कॉलेज के प्लेसमेंट से आपको 2 लाख महीना देती है और आप 3.5 लाख। This is really a very big achievement. Absolutely, man. Like freelancing is rewarding. Yeah. As a career, freelancing is quite rewarding, and once you get into it, ठीक है, घुसना बहुत मुश्किल है. It's quite a hard work, quite a big deal. Yeah. While you get your first few clients. But once you are into it, like it's quite easy, quite the lifestyle you would be living, and you'll be getting a heck lot of amount. सर आपको देख के मुझे एकदम से जोश आ गया जैसे फ्रीलांसिंग करने का। तो आपको उस टाइम किसको देख के, किसका इंस्पिरेशन लेके आप सर स्टार्ट किए थे फ्रीलांसिंग? रोल मॉडल कौन था सर आपका? There were a lot, but to name one was my senior. He was Navneet sir. He was from 2K14 batch. And when I met him for the first time in first year,
Like he was that serial entrepreneur जिन्होंने अपना corporate job छोड़ करके he started his own business. He was living a great lifestyle. I remember he returned from Thailand at that point of time. Right, so he was my kind of first inspiration that I came across, or and the first day I met him was like quite a turning point of my life. The mindset that he inculcated, the things that he talked about, मेरे को लगा भाई ये बंदा स्मार्ट है, इसको फॉलो करने का है. And apart from that, I also follow a lot of content creators and YouTubers, namely Beer Biceps, रणवीर लाबादिया, राज शमानी, वैभव सिंधी. Like इनको मैंने बहुत क्लोजली वॉच करा है. Like I had this mindset कि if you mindset क्या मतलब quite common perception है कि if you sit with 5 millionaires, you will be the sixth one, right? It's all about the संगति that you are around, right? So मैंने ये सोचा कि यार मेरे अराउंड तो बहुत गरीब लोग हैं, सारे गरीब, मैं भी गरीब हूँ, तो गरीबी रह जाएगी हर वक्त. So I started watching podcast. ठीक है, पॉडकास्ट इज अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, तो 2 घंटे 1.5 घंटे तक चलता है वो. किनका पॉडकास्ट आप देखते हैं? वही नेमली बियर बाइसेप्स एंड जो रोगन एक्सपीरियंस, राइट. सो आई मेरा एक लाइक कॉन्सेप्ट था या फिर थेसिस था कि इफ आई वॉच 2 पॉडकास्ट अ डे तो मैं 4 घंटे अमीर लोग के साथ बिता रहा हूँ, तो मेरी संगति अच्छी हो रही है, तो आई वुड बी, मेरा माइंडसेट में चेंज आएगा एंड व्हाटएवर जो भी वो इफेक्ट होता है वो आएगा. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग पॉडकास्ट. आई वॉच अ लॉट ऑफ इट. लाइक मैंने बियर बाइसेप्स का ऑलमोस्ट सारे देखे हैं. लाइक फ्रॉम 2020 अक्टूबर आई स्टार्टेड वॉचिंग, और वहां से लेकर के अभी तक मैं आई स्टिल वॉच ऑल ऑफ द एपिसोड ऑफ दैट पॉडकास्ट. जो लोग एक्सपीरियंस के मैंने बहुत सारे देखे हैं. इलॉन मस्क के साथ जो उसने किया था, इट्स लाइक क्वाइट इंस्पायरिंग, इट्स फकिंग इंस्पायरिंग, एंड आई वुड लाइक रिकमेंड द ऑडियंस टू वॉच इट. So these were some of the creators that I got inspired. सर, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर से ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर दिया था, आपके रूममेट्स होंगे जो कोडिंग कर रहे होंगे, गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या तो फिर एकेडमिक्स पढ़ रहे होंगे, तो आप उस टाइम सर इनसिक्योर नहीं फील कर रहे थे कि सब प्रिपेयर कर रहा कुछ ना कुछ, और आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे थे जो कि कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं आते ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो उस टाइम आप सर कैसे ये सब चीज में टैकल कर रहे थे? It's all about being secure about yourself. It's all about discovering yourself first of all. ठीक है, as I said कि engineering का decision लेने में nothing of me was involved. I just went with the flow and वो बहुत horrible निकला and I failed in JEE almost, और I got into BIT Sindri. So from that I concluded कि मेरे को engineering नहीं करनी है, right? So again I had to make sure कि whatever I would be doing, I would be in love with that. क्योंकि एक फैक्ट ये है कि भाई तुम जो भी करियर चॉइस लेने वाले हो, यू वुड बी डूइंग दैट फॉर योर नेक्स्ट 50 to 60 years and simultaneously for 8 hours a day, 5 days a week, right? So it's the one of the most important decision of your life, right? So it's all about being secure about yourself कि तुमको जो करने में मजा आ रहा है तुम वो करो. Although ठीक है, अगर मेरे को लगता था कि I would not be earning that much maybe, but I had this feeling in my mind कि मेरे को करने में मजा आ रहा है. I never felt कि I am working or I have to put in efforts. On the other hand, जब मैं पढ़ाई करता था for engineering, for GATE, for CAT, मुझे लगता था मैं efforts डाल रहा हूँ. You did not get that kick in that. Kick नहीं मिलती थी. It felt so seamless in graphic design. Even now, मैं आधी रात को 12 बजे काम करता हूँ. Like people would say कि यार अब तो हम लोग सब थक गए, पार्टी हो रही है, पार्टी करने के बाद सब सोने चले गए, मैं बैठ के काम कर रहा हूँ. It shows that you love graphic design. I'm love interest. एडवांटेजेस ग्राफिक डिजाइनिंग का आ रहा है, कोई सर इसका डिसएडवांटेज आप सर बोलना चाहेंगे? बहुत है भाई. अगर if you are getting a lot, if you are like getting a lot of value out of it, then बहुत सारे drawbacks भी होते हैं simultaneously. Like ultimately life is all about piano keys, right? So disadvantage सबसे बड़ा ये है कि you are not living a secure life, right? On the other hand, सरकारी नौकरी अगर मिलती है तुम्हें, तो you are secure for the rest of your life, right? But in the space I am working in, the Web3 space, it's quite volatile. कभी भी collapse हो सकता है, and graphic design is probably not recognized till now, not recognized as the mainly you don't have the job security. Exactly, it is not recognized as a mainstream career, I would say, in India basically. So it's not a secure part, I would say. काफी risk होता है. But in my case, since I have reached somewhere, so it's quite stable for me as for now. But whenever you get into it as a beginner, तुमको बहुत सारे backslashes मिलने वाले हैं from your family, from everyone around you. Just similar to all other passion वाले profession जो होते हैं, singing, music, dancing,
जो भी होता है तुमको सिमिलरली यहाँ फेस करने को मिलेगा, बट ऑब्वियसली रिस्क है तो रिस्क है भाई। सर आप ये बताइए, व्हाट आर द व्यूज ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर फ्यूचर? फ्यूचर आई थिंक कि थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा। इफ यू आर लाइक थिंकिंग टू परस्यू ग्राफिक डिजाइनिंग, आई थिंक कि एआई काफी ज्यादा लाइक इट्स इन पिक्चर ऑलरेडी, और यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू लाइक होन योर क्रिएटिव स्किल्स। फिग्मा काफी ज्यादा अभी पॉपुलर हो रहा है एंड इट्स गोना स्टे फॉर अ वाइल। सो लाइक इट्स जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं ना, सब कुछ इवॉल्व करने वाली है ऑब्वियसली। तो you would have to be a constant learner, like evergreen learner, and you will be like earning quite good amount. सर तो इसमें न्यू डिजाइनर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है सर? Problems not, भाई it's all about the mindset. If you would look up to something as problems, तो problems लगेंगी, but if you would look up to कि challenges है, तो वो challenge लगेगा। वो it would be like a game. You need to solve a problem, you will be solving a challenge, और वो काफी आसान हो जाएगा। Not a big deal, like तो सबको इवॉल्व करता है। In 1980s you would be having बड़ा बड़ा कंप्यूटर्स था, अब एक दूसरा लैपटॉप आ जाता है। So सब कुछ इवॉल्व करता है, not a big deal. Means you have to evolve with the time. With technology, with time, with performance and stuff. Yeah. कोई सजेशन आप देना चाहते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हो या तो कॉलेज जाना चाहते हो? सजेशंस के नाम पे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट गो एंड एक्सप्लोर, never restrict yourself to a certain thing, don't be rigid on anything. तुम्हारे thoughts, तुम्हारे opinions, nothing is like a fact. हर चीज के लिए ओपन रहो, हर वक्त सीखते रहो। there's much more to learn everywhere. कभी अपने आप को रोको मत, and just figure out whatever you love, and everybody is figuring out, as राज शामानी से पॉडकास्ट का नाम ही फिगर आउट है भाई। तो सब फिगर आउट कर रहे हैं, एंड डोंट बी नर्वस, डोंट बी कॉम्पिटेंट कि यार उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, और जस्ट कीप फिगरिंग आउट what you love doing, and once you have got it, just keep doing it and do what you love. It was really nice to talk with you, sir, and thank you so much for your precious time and coming to my channel. Thanks for having me again, man, and I hope the audience finds value out of it, and thanks for having me. So guys, I hope ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सारा सोशल मीडिया हैंडल सर का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। डू व्हाट यू लव। बाय।